then as long as the prevention of the different problems associated with HRT is concerned, then one of the indication is those who are adversely have got an adverse history of the osteoporosis. Exactly the way I have, all my family members, female members, have osteoporosis and had fracture of the neck of the femur. My mother, my elder sister, and everything. So these are the women who may have HRT for the prevention of the osteoporosis. But again, I say that probably they must have it when they are in the perimenopause age group, not 10 years after the menopause. And otherwise, they don't recommend HRT for preventing CST or other problems which are associated with menopausal symptoms. So that is, but the other thing I feel is that genital atrophy is one of the things which really needs treating topically with estrogen, very low estrogen, and that a patient needs for a long time. It is not a matter of treating for 1 week or 2 weeks, it may be 6 weeks, it may be 8 weeks. So normally it takes a longer time for the genital atrophy to be treated. Thank you, madam. आपने अभी genital symptoms का जिक्र किया. As we all clinicians over here, I'd like to ask Professor Sumbal about this, because earlier we were discussing in relation to the midlife sexual reproductive health, but the sexual part of that life. You know, the patients sometimes they don't want to, or they want to tell us, but maybe we are not welcoming enough for them to share their intimate queries that they have. And that is aspect of midlife as being very neglected by them, in the sense that they do not come up and ask, and maybe we are not that welcoming or open to them. So how can deal with that? Thank you, Simon. Thank you, Dr. Yes, I feel it is a very much neglected part of our general contact also with the patient. When a patient is coming to us, none of us discuss the sexual problems related to it. In fact, the International Menopause Society, they have introduced a white paper on it, and the condition they have labeled it as hypoplastic sexual disorders, and which are responsible for a lot of depression in our women. I see women, they are coming to us, and until and unless we don't probe up the question to them, there is a little apprehension in discussing it. They feel that probably it's a little taboo to discuss it, and that is the reason why even our health providers do not take up this very serious issue. I have seen women crying over it, and they say, Dr. Saab, how to discuss with it? We feel that it is a taboo, and we need to discuss it. We need to get out of this problem because it is having an effect on the quality of our life. So I think as clinicians, we should, and they have actually made up a whole questionnaire on that, which I would like to share it on our paper, on our page, on the Pakistan Menopause Society page, which we have. And this questionnaire is to be used by all clinicians. When a patient is coming to you, she is not going to discuss it with you, but we have to bring these questionnaires to her in order to improve her quality of life, and probably one cause of depression in our postmenopausal women. Thank you. So, in HRT, from oral to subdermal I'd like to ask Professor Rubina, what is the ideal HRT? Thank you, Saima, Dr. Shaheen, entire SERV team. First of all, before I answer your question, I would like to clarify for those trainees the new terms. HRT has been replaced by the term MRT and atrophic vagina, MHT, menopause hormonal therapy. And atrophic vaginitis has been replaced by genitourinary symptoms rather than the word atrophic sounds gaye kaam se. So these two terms have changed. So the question now is, which is the ideal? With time, things have changed. First of all, if a woman has had a hysterectomy, you can give only estrogen. You don't need to add a progesterone. Previously, the only available one was conjugated equine estrogen, but now that has changed. The estradiol is a better estrogen. Right? So that is your therapy. They say this is a better form.
As far as local is concerned, the ideal is estradiol. Conjugated equine is absorbed locally, like we were talking in the morning. So if you give locally conjugated equine, unfortunately we have conjugated equine available, but we should beware that because estradiol is not absorbed, conjugated equine is absorbed. So if you're giving anybody, there's no doubt, like Professor Asif said, that local is the ideal. But the ideal is local estradiol, which we are trying to get. We have talked to several pharmaceuticals, भाई हमारी ऑर्डिनरी सफर कर रही हैं, आप प्लीज estradiol अवेलेबल कराएं, और भी आजकल डॉलर का चक्कर चल रहा है, but we are working on it कि प्लीज आप estradiol मंगा लें, because this conjugated equine is like taking oral tablet. देखो थोड़ा स्मॉगर और ये आ रही है, लेकिन beggars can't be choosers, तो जो है वो दे रहे हैं, लेकिन you should tell your patient that if estradiol आप तो that is the better option. That is good. Now third category, a woman with the uterus. The ideal is you have to give them a combination of estrogen and progesterone. And there are several options, timolol, and they depend, tailored according to the needs of the patient. And the International Menopause Society, the ideal drug is a drug called Bijua. Bijua starts with estradiol and the estrogen. And the ideal progesterone also, not peroxyprogesterone acetate, वो प्रोफिटिक के नाम से. तो मैंने उसको बहुत डेप्थ में स्टडी किया, मैंने देखा बिजुआ में, क्योंकि वो बिजुआ लॉन्च हुई थी, फिर कोविड आ गया था, फिर उसकी पैकिंग में कोई मसला आ गया था, फिर वो हो गया, रीस्टार्ट हो गई है, FDA ने अप्रूव कर दिया है, कनाडा में there's a long wait list for this drug, because इसका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों वो है. तो मैंने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया कि what हमारे पास वो एस्ट्रोजन अवेलेबल है, हमारे पास प्रोजेस्टेरोन. तो हमारे पास उसकी एस्ट्रोजन estradiol 2 मिलीग्राम की टैबलेट में, बिजुआ में वो estradiol 100 mg. If you want, after proper mammogram, DEXA, this you can give half of the tablet which is Dupro-Ganova के नाम से आती है हमारे पास, वो estradiol बिजुआ में है, और उसकी प्रोजेस्टेरोन है वो हमारे पास प्रोजेस्टिक के नाम से है, प्रोजेस्टिक. तो हम साथ वो ऐड कर सकते हैं और we can copy that. After mammogram and everything, और इसमें 30% को withdrawal होता है, तो और 70% को withdrawal नहीं. So this is the idea. So ideal according to the Pakistani standards, because हमारे यहाँ बहुत चीजें ideal नहीं है, we have to make our own ideas. So जब ये panel discussion set हो रहा था, so the title was being decided. So the person who came up with the title, I would like ask Dr. Shaheen Zafar, now it's your turn to play with HRT, So it's HRT, MHT, you have to now play on. The topic of this panel discussion is HRT or no HRT. Because ये तो establish हो गया है कि HRT yes. अब तो इतने सालों की मेहनत के बाद इतना establish हो गया है HRT. Everybody, HRT, yes, this is a very important, HRT. So now, दूसरी बात ये कि अब तो इंटरनेशनल सोसाइटी ने भी रिकमेंड कर दिया है कि practically speaking there is no woman who you can deny कि नहीं आप HRT बिल्कुल नहीं लेना, except कि वो breast active breast है, तो इसमें इवन जो कहते हैं कि आप 100% deny नहीं कर सकते, आपको डिसीजन फीमेल को पढ़ाना चाहिए. एक तो ये बात है. अब यहाँ बात आती है कि हाउ क्या सबको एक ही किस्म की दवाई एक ही ब्लैंकेट के अंदर सबको कर देंगे या क्या करेंगे. तो यहाँ बात है रोल प्लेइंग विद HRT. आपको HRT कस्टमाइज करना होगा पेशेंट की नीड के हिसाब से, उसका जो पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से और उसकी जेब के हिसाब से, प्लस अवेलेबिलिटी हमारे शॉप्स में क्या है. बाहर तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, पैचेस हैं, क्रीम है, रिंग है, क्या क्या, हमारे यहाँ कुछ नहीं. हमारे यहाँ एक प्रोबेनॉल मिलती है, एक मेरोलिन मिलती है, ये 2 एस्ट्रोजन हो गई अलोन, काफ़ी कॉम्बिनेशन में एक प्रोबायोटिक मिलता है, कभी कभी क्लीवन मिल जाता है. और किसी को याद है तो बताए और किसी को पता है यहाँ पे चीजें पता है मुझे.
सपोर्टिव तरीका है बट आई एम फाइटोकेमिकल सेइंग हमारे पास अलग से एस्ट्रोजन जो प्रोजेस्टेरोन में मिलता है वो प्राइमरी है या प्रोजेस्टेरोन है। अब इन्हीं के बीच में हमें प्ले करना है, हमें इन्हीं के बीच में खेलना है, हमें अपने पेशेंट्स को इन्हीं में से बना के देना है कि भाई आप HRT हिस्सा ले सकते हैं, नहीं प्रिवेंशन। क्लियर बात है, यूट्रस अगर निकल चुका है तो एस्ट्रोजन अलोन जैसे मैंने बताया आप चाहे प्रोग्राम दे दें, चाहे आप मेनोरिन के नाम से आता है 0.3 मिलीग्राम। 0.3 मिलीग्राम बहुत ही स्मॉल डोज है और बहुत ही सेफ डोज है, बहुत ही सेफ डोज है, इस्टेब्लिश कर चुकी है इंटरनेशनल सोसाइटी, कोई परेशानी नहीं है। तो उसमें 0.3, 0.45 और 0.625 दिया जाता है, सेम बेनिफिट। तो अगर आपने कॉन्जुगेट में 0.6 देना है तो 0.3 तो हमारी एशियन वुमेन के लिए जो कॉन्जुगेटेड इक्वाइन एस्ट्रोजन जो 0.3 मिलीग्राम का सेफ है, वेरी सेफ फॉर दोज जिनका यूट्रस निकल चुका है। अब नाउ वी हैव टू प्ले अराउंड। अब किसी का यूट्रस मौजूद है और उनको ज़रूरत है 60 साल के बाद, दूसरी बात यहाँ पर कि हमें जितना रजिस्टर करने उतना अच्छा है। तो पेरीमेनोपॉज टाइम इज द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। और पेरीमेनोपॉज होता है जब उनको सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं अराउंड 45, 46 से हम पेरीमेनोपॉज में एंटर होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ जब स्पेशली अगर सिम्टम्स शुरू हो गए हैं तो इज द मोस्ट बेनिफिशियल टाइम टू स्टार्ट MST। जितनी भी स्टडीज़ हैं वो बाद में कार्डियोवैस्कुलर से प्रिवेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस से प्रिवेंशन, सब में यही है कि आप इसको दिस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी में यूज करें, इसको करें कि दिस इज पेरीमेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज में यूजुअली शी वोंट बी वरीड अबाउट हैविंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो आप उसको कंबाइन भी दे सकते हैं और वो हर महीने उसको सिर्फ परेशानी कि वो इरेगुलर ना हो, हेवी नहीं हो, ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं हो, तो आप उसको बड़ा रेगुलर साइकिल हो जाएगा। आप उसको कंबाइन में प्रोगेल्यूटन या क्लीमेंट जो मिलती है हमारे यहाँ एक मिलती है। अगर के एज ज़्यादा हो चुकी है, अगेन आपको फिर से एक और डिफरेंट किस्म का पेशेंट आ गया, उसमें डिफरेंट किस्म की HRT बना के देनी है। तो अगर एज ज़्यादा हो चुकी है, यूट्रस भी है, पीरियड नहीं चाहिए, तो इसी प्रोगेल्यूटन को इसमें स्विंग पोजिशन दोनों शामिल है। आप जरूरी है कि आप इसका मंथली साइकिल करें, आप इसको 4 मंथली साइकिल भी कर सकते हैं। 1 पैक, 2nd पैक, 3rd पैक, 4th पैक विड्रॉल, और एक विड्रॉल रेडी हो जाएगी और फिर 4 पैक और फिर विड्रॉल। साल में 3 या 4 पीरियड आप पाएंगे, दैट्स इट, और बड़ा रेगुलेटेड होंगे, हेवी नहीं होंगे और एंड मोस्ट ऑफ देम विल एग्री विद इट। इसके अलावा हमारे पास एक प्राइमोटेन है और एक प्रोग्राम अलग से या मेनोरिन है। आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। आप कंटिन्यूअस एस्ट्रोजन देते जाएं मेनोरिन से 60 डेज, उस पर आप 10 डेज का प्रोजेस्टेरोन ऐड कर दें एंड विड्रॉ। तो शी हैव ए विड्रॉल रेडी। एंडोमेट्रियम को कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एस्ट्रोजन से इसीलिए करते हैं, एंडोमेट्रियम को एंडोमेट्रियम का रिस्क होता है, वो रिस्क नहीं है कि आप विड्रॉल करवा रहे हैं 3 महीने 4 महीने के बाद। और ये थेरेपी अगर इंटरेस्ट है, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर विड्रॉल जो होती है। अच्छा, ओल्ड एज 75, 80 जिनको यूरिनरी इश्यूज बहुत खास यूरिनरी इश्यूज बहुत बड़े होते हैं, रातों को 3 दिन तक उठ के जाना और अर्जेंसी और यूरिनरी सिंड्रोम जो कहलाता है, यूरिनरी सिंड्रोम बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, जिसका म्यूकोसा एट्रोफी हो जाता है, ट्राइगोन का म्यूकोसा एट्रोफी होता है, वो इरिटेट करता रहता है, दे हैव टू गो वेरी फ्रीक्वेंटली एंड इट्स ए प्रॉब्लम फॉर 80 साल की औरत। और तो अब उनका तो यूट्रस है, उनको क्या उनको विड्रॉल कराएंगे, एक्सेप्टेबल ही नहीं है। इसमें ब्रिटिश मेनोपॉज सोसाइटी और सबके रिकमेंडेशन है कि आप 6 months to 1 year आप सेफली उनको लो डोज एस्ट्रोजन दे सकते हैं और एंडोमेट्रियम इतनी जल्दी हाइपरट्रॉफी नहीं होता। और अगर आप एंडोमेट्रियम की फिक्र है तो आप हर 3-4 महीने पे TBS से एंडोमेट्रियम को फॉलो करें। You can give estrogen alone and urinary symptoms will disappear within 15-20 days। वो आपको बहुत दुआएं दे रही होंगी वो खातून। और अगर आपको फिक्र है कि एंडोमेट्रियम को हाइपरट्रॉफी ना हो जाए, आप 4 महीने के बाद, बल्कि 6 महीने, वो तो 6 महीना कहते हैं, 6 महीने तक तो कोई मसला ही नहीं। आप बहुत केयरफुल 4 महीने के बाद TBS कर लें, उसका एंडोमेट्रियम को फॉलो करें। अगर वो ठीक हो रहा है तो ठीक है, आप स्टॉप कर दें, थोड़ा बहुत स्पॉटिंग होगी, उसका दोबारा शुरू कर सकते हैं। या मोस्ट प्रॉब्ली बट से ब्रिटिश मेनोपॉज सोसाइटी के 6 months to 1 year आमतौर पे इतनी ओल्ड एज में इतनी जल्दी हाइपरट्रॉफी नहीं होता है एंडोमेट्रियम का, लेकिन सेफ्टी के लिए अच्छी बात है कि एंडोमेट्रियम में अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा तो स्पॉटिंग शुरू हो जाएगी। द मिनट स्पॉटिंग शुरू की आपको अलार्मिंग साइन आ गई, आप जाए एंडोमेट्रियम को निकालने, फायर करें, उठाने
तो दिस इज व्हाट आई कॉल प्लेइंग विद HRT। या पेशेंट की इंडिविजुअल नीड, इंडिविजुअल डिमांड, उसके आगे पीछे क्या है, उसके साथ ये औरतें कौन सी होती है? ये औरतें होती हैं जो अपने बच्चों पर डिपेंडेंट होती है। या तो बेटा उनको लेके आएगा, या तो दामाद लेके आएगा, या तो बहू लेके आएगी, या तो बेटी लेके आएगी, उनके अपने हालात इसमें हैं। अब उनकी यूरिनरी प्रॉब्लम के लिए हर वक्त यूरिन दिया करवाओ, जैसे हम लोग आसानी से हम यूरिन दिया सीएस लिख के भेज देते हैं, और वो एक मुसीबत आता कुछ नहीं, उसमें सीएस हमेशा नहीं और वो बेचारी आगे पीछे आगे क्या वो सफर करती रहती है, इन सारी या तो सफर करती रहती है, या कितना वो अपने बेटे बहू को बोलेंगे भाई मुझे मसला है, मुझे मसला है। तो मुझे इन औरतों से बहुत बहुत ज़्यादा इनका होता है, इसलिए मुझे कुछ करना चाहिए। और मुझे बहुत दुआएं मिली जो 80-85 बेड रिडन है या व्हील चेयर पे हैं या जो भी मसले हैं, उनका अगर ये यूजुअली मसले उनके हल हो जाते हैं, क्रीम अवेलेबिलिटी गुड सोल्यूशन वहाँ आया। तो ये मैंने बहुत लोगों को यूज़ किया है और रिकमेंडेशन भी मौजूद है, मैंने प्रोटोकॉल को फॉलो किया है और इट इज़ वेरी गुड। तो हर एज की खातून में आपको उनके हिसाब से प्ले अराउंड करके, उनके हिसाब से जो हमारे यहाँ अवेलेबल है और जो उनकी जेब है, जो उनके पैसे खर्च कर रहा है, उसके हिसाब से आपको अच्छा HRT एक कहते हैं रेसिपी बना के एक कम्बिनेशन बना के उनको देना होगा कि आप ये इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच। So एक और चीज व्हाट अबाउट जी मैडम प्रोफेसर आदित्य पास कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यंगर एज ग्रुप में तो 2 मिलीग्राम स्टेडियम दिया जा सकता है, लेकिन अगर इफ यू आर यूजिंग MST इन द ओल्डर एज ग्रुप फॉर सम रीजन आफ्टर द एज ऑफ, वैसे तो कहते हैं कि 50 इयर्स तक MST देनी चाहिए, उसके बाद अगर बहुत ज़रूरी है 2 to 3 इयर्स तक दे सकते हैं, वरना नहीं देनी चाहिए। इफ एट ऑल हमें किसी वजह से देनी है तो फिर लेसर अमाउंट ऑफ द एस्ट्रोजन 0.5 मिलीग्राम टू ओनली 1 मिलीग्राम रिकमेंड करते हैं। अब मुझे नहीं समझ में आता कि 0.5 मिलीग्राम और 1 मिलीग्राम की डोज पाकिस्तान में कहाँ से लाए, क्योंकि प्रोगाइनो में आती थी, अब वो भी नहीं आती, अब वो 2 मिलीग्राम की आती थी। अच्छा अब आने लगी। बहरहाल ओल्डर एज ग्रुप में उसको भी जो है ना 0.5 मिलीग्राम या 1 मिलीग्राम उसको यूज होना है। In the age group, in the earlier age group, transitional age group, you can go to 2 milligram, otherwise it has to be 0.5 to 1 milligram. And the least amount of the progesterone to be added for the withdrawal, because the progesterone is not prescribed. I think this is very important, especially medroxyprogesterone. जी, हफ्ते में 2 दिन शायद इतना अच्छा काम ना करें, लेकिन आई बिलीव ऑन दिस। 2 दिन क्या लेंगे? ऑल्टरनेट डे लेना। I don't know, it depends के ब्लड लेवल्स किस तरह से मेंटेन होंगे। ऐसा जैसे रिकमेंडेशन है नहीं, लेकिन you can try alternate days, symptoms खत्म हो गए तो सही। It may take a bit longer time to improve the symptoms. और दुबली पतली छोटी सी It has to be micronized steroid, it has to be micronized progesterone. And it has to be recommended because you know we are sitting in a evidence-based manner, so you cannot just बाकी ठीक है कॉकटेल और रेसिपी तो बनानी है, लेकिन बिल्कुल ही घरेलू रेसिपी नहीं बना लेनी। जी जी जनरल सैलाब would you like to say something? माइक प्लीज देना। अच्छा मैडम, इससे पहले के सवाल पूछे मैडम, एक चीज ऐड कर दें रोशानी, जो हमारी यंग वुमेन हैं विद प्राइमरी ओवेरियन insufficiency, HRT for them, because we all are seeing a lot of patients of PUR. So anyone of you? आप एक औरत जो कि फर्टाइल है, हर महीने अपना एग बढ़ा रही है, आप कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन करो, OCP लो, OCP का डोज कितना हाई है जी, कोई खतरा नहीं, हम OCP दे रहे हैं, सालों से दे रहे हैं और दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। एक औरत जिसकी ओवरी फेल हो चुकी है, उसका अपना एस्ट्रोजन है ही नहीं उसकी बॉडी के अंदर, उसको जब हम एस्ट्रोजन रिप्लेस करने की बात करते हैं तो फिर हम HRT से डरना शुरू हो जाते हैं, क्या फजूल बात है। यंग औरत को जब उतरेंगे ना फिर वो कहाँ बैठेंगे, रिकमेंडेशन ये कि बेटर टू रिप्लेस हर एस्ट्रोजन बाय OCP, which is the dose she requires, young है, तो रिकमेंडेशन ये कि आप उनको OCP पे शुरू करें
और मे बी आफ्टर सर्टेन एज मे बी 30, 37, 38 अब आप HRT पे कन्वर्ट हैं जो कि लोअर डोज है, और फिर एटलीस्ट 50 इयर्स ऑफ एज तक जो कि नेचुरल एज ऑफ मेनोपॉज है, माँ तक तो देना ही देना है। हम देखते हैं 30 इयर्स की लड़की, उसको मेनोपॉज हुआ है और ओवेरियन फेलियर हुआ है, तो उसको कितने साल, 20 साल और खाना है, तो एटलीस्ट 50 इयर्स तक उसका एस्ट्रोजन रिप्लेस करना है। और इन माय पर्सनल ओपिनियन आप 50 इयर्स के बाद क्या होगा, एक औरत जिसको 50 इयर्स से मेनोपॉज हुआ है उसको आप अब HRT शुरू कर रहे हैं और इसको क्या रोक देते हैं, क्यों रोक रहे हैं, इसको चलने दें आगे, तो बेसिकली शी नीड्स एन एस्ट्रोजन। लेकिन सीधी सी बात है, सिम्टम एक चीज़ है और हिडन जो प्रॉब्लम है ना ऑस्टियोपोरोसिस वाला, वो एक चीज़ है, वो आपको नजर नहीं आ रहा, जब पता चलेगा जब फ्रैक्चर हो चुका होगा, जो कि 10 साल बाद होगा, और उस वक्त आप क्या करेंगे, जब आप हड्डी टूट गई, और अगर हड्डी टूट गई और अम्मा बिस्तर पर लेट गई विद हिप फ्रैक्चर, तो उनकी मॉर्बिडिटी सोचें और पूरी फैमिली में बर्डन सोचें उसका, तो हमें उस फ्रैक्चर से बचाना है हमको। हर वक्त औरतें बैक पेन, इससे बचाना है। तो एक हिप फ्रैक्चर की जो मॉर्बिडिटी है पूरी फैमिली को प्रॉब्लम में डाल देती है, तो हम इसकी प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। इसलिए मेरे ख्याल में आई एम वेरी ओपन विद HRT and I have been using it liberally with the recommendation, whatever recommendation is there. मैंने पर्सनल रेसिपी कोई नहीं बनाया ये सब चीज़ें पढ़ लिखे जी नहीं मैडम, अगर आपने, मैंने सिर्फ ये मेंशन की थी कि जैसे अभी डॉक्टर बीना ने मेंशन किया, जो अवेलेबल में से हमें जो कॉम्बिनेशन कॉकटेल बनाना है वो एविडेंस बेस्ड और रिकमेंडेड ही के अंदर रह के बनाना है। जी जनरल शहनाब प्लीज। Thank you very much for having this discussion. I think this is the need of the day. और हम सब लोग यहाँ पे either we need it ourselves or we prescribe a lot of. मैं खुद भी I'm a strong proponent of keeping the healthy women with quality of life. क्योंकि जो clientele हमारे पास भी आते हैं, even the poor woman, she requires certain MHT is required by everybody. So I would request the Pakistan Menopause Society to use the influence as a society to have these preparations available. Why should we be making cocktails? थोड़ा सा तो आप बना सकते हैं, लेकिन to have for the ease of prescription and to make it more user friendly both for the healthcare provider and the patient. तो चाहे वो 2 गोलियां खाए, वो एक ही preparation है ना। तो देखिए the issue with Feviston Conti was कि वो सस्ती बहुत थी हमारी कंट्री में, 512 रुपीस की थी, जबकि नेबरिंग कंट्री में श्रीलंका में 5000 सस्ती बहुत थी ना। तो वो आप पाकिस्तान मेनोपॉज सोसाइटी शुड राइट कि अ वेरी गुड ड्रग वाज विथड्रॉन फ्रॉम द मार्केट, तो आप बेशक थोड़ा महंगा ले आए, 2000 की उसको ले आए, बट इट शुड बी ब्रॉट बैक। देन द डिफरेंट प्रिपरेशन कि हमने इतनी फॉर लोकल ईस्ट्रोजन ईस्ट्राडियोल के लिए हमने सब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था कंपनी का और बाहर, अब वो डॉलर कन्वर्जन पे मामला अटका हुआ है, अब वो आपके हाथ में हमारे हाथ में नहीं है। हमने तो रिकमेंडेशन भेज दी है, लेकिन अवॉर्ड इज योर कॉर्ट था। अब इतनी लड़े और बिल्कुल मैं मिली भी लोगों से, मैंने बिल्कुल अवेलेबल करा दी, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया, लेकिन वो डॉलर नहीं मिल रहे, डॉलर का चक्कर हो गया है वो कॉन्ट्रैक्ट। मैंने भी एज एडवाइजर गायनी आर्म्ड फोर्सेस मैंने लिखा था एंड आई हैड अ मीटिंग विद इस्लामाबाद ड्रग रेगुलेटर्स के साथ भी, उन्होंने भी एग्री कर लिया था बिकॉज देयर ओन वाइफ वर गेटिंग द प्रिस्क्रिप्शन एंड दे वर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट अवेलेबल। एवरीबडी इज रेडी, नहीं मतलब प्रॉब्लम पाकिस्तान गवर्नमेंट में, वो तो बेचने वाले तो बेचने को रेडी है, पाकिस्तान गवर्नमेंट आई यहाँ की भी ड्रग रिकॉर्ड ने अप्रूव कर दिया, बस वो कुछ डॉलर कन्वर्जन पे कुछ इनको